As a last time, we were discussing about cyber attacks, cyber crimes, and we actually discussed a few case studies, a few cases at international levels, that how actually countries are involved in cyber war. Okay. This is also the example of actually the cyber attacks or cyber crimes. There are some systems that are used for the industrial control, and those systems are actually called the supervisory control and data acquisition systems. In 80s, actually, the industrial control was like quite manual. There are different lights, different gauges, different kind of valves, and actually of different type of operators. The humans are involved to actually monitor the industrial process. But with the advancement of technology, obviously with the passage of time, different companies, IT companies, they also developed solution for the industrial control. But those systems were actually the proprietary systems. And obviously when you have proprietary systems, those are actually expensive, not the cost effective. Then actually the people, the users, the industrialists started to ask about the open source or the open systems that are actually interoperable, and the systems that are less expensive. So supervisory control, that is SCADA system. SCADA system is actually the answer to those problems or those queries. But when we say that system is online, our system is actually open, then there are actually some built-in problems with it. What we already discussed. When we are online, we have threats to data privacy, and obviously to actually there is a threat to hack the systems. So same happened with these systems, SCADA systems. This is just a figure to explain that rather than having gadgets and valves and different kind of lights to control the industrial process, now we have different kind of sensors, different devices installed on the plant, industrial plant, and then we have a control room where we have large screens and we can actually observe there. And we have different kind of automated alerts and notifications about the process, whatever is the process. Stux is quite difficult to pronounce. Stuxnet Worm. That was the firm. Actually, it was the attack on the SCADA systems in Iran, and what happened? They actually targeted their nuclear program. And obviously, it was kind of serious nature, and it caused the shutdown of the nuclear program for some time. And they actually assessed that it was probably by the Israeli forces. They actually attacked. What we actually discussed already, the different nations, different countries have, these kind of war. That is cyber war. Okay. There are different kind of cyber attacks at different times on different networks. So Mandiant is actually the cyber security firm in US. They study this series of attack in last 10 years time, and then they found actually most of the attacks were from originated from the China. And then their assessment was like it was actually by the People's Liberation Army, that is official army of the China, in different countries and different networks. And they actually, their claim, their study, Mandiant, they actually found that it was like the data stealing of like hundreds of terabytes, and obviously and other kind of losses to the computer networks. But China's official response was like it is just a blame. Now we are not sure, who is actually saying the truth.
Did you ever heard about the hacktivist? Hacktivism? जी मंसूर, hacktivism. Hacktivism. एक्टिवली बोलना चाहते हो और आपके पास स्किल्स हैं हैक करने के, आप थोड़ा सा इलीगल काम करके एक्टिविस्ट बन सकते हो, करके आप कहोगे इसके खिलाफ। So hacktivist means that someone who has hacking skills or hacker, and if he or she works for some social cause. First, like we have social activist. Similarly, we have hacktivist. So there is an organization, Anonymous. Anonymous is actually the group of hacktivists, and they are involved in different such social activities on the globe. And here are a few examples are their attacks, their DDoS attacks, by the Anonymous on different networks, on different networks of the different companies, organizations like Church of Scientology, RIA, PayPal. Like just see why they actually targeted Visa, MasterCard or PayPal, because they actually stopped the funding to the Julian Assange. They actually then decided to hack or actually flood with the attacks to actually shut down their service. Similarly, US Department of Justice, they also actually targeted that department because they actually shut down the mega upload site. So these are just few examples. ठीक है कुमैल, क्या बात की है मैंने? किस तरह के हैकर्स हैं ये? Social cause, yes, social activists, ठीक है, activities, hacking activities for some social cause, ठीक है ना, that is hacktivist, ठीक है, hacktivism, this concept is hacktivism. Just आप मतलब सिंपली ये हो सकता है ना कि एक किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को आप बहुत सारे लोग एक साथ ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें, just to highlight the problem that this is some real problem. And obviously when there is kind of flood to someone, he may actually he may notice it. Okay, today's major topic, our main topic is online voting. What is online voting? मोहम्मद बताएं, what is online voting? वोटिंग में ये कॉन्सेप्ट है कि ओवर द इंटरनेट हम वोटिंग कर सके, कैंडिडेट हम चूज कर सके कौन सा सेलेक्ट होगा. Simply to use the network, computer network to actually cast your vote, that is online voting. It is not actually the new concept. In recent past there are examples to actually have online voting. Even different companies, different organizations, they actually arrange such kind of the voting mechanism. Here is actually the discussion that how this concept was actually originated. What was the problem then they actually thought about the online voting. In 2000 election in US presidential election in Florida, that was kind of decisive state. That state, if some party gets more votes from that state, and that is actually the winning party. And then there was actually a problem with the ballot papers. What was the problem? Two problems. One is actually, if you just see this, okay, this is called butterfly ballot, infamous butterfly. So in Florida they use this paper ballot. What is the problem with this one? No, black and white. It is actually the confusing. You see, there is a list of candidates, and then in the center they have a hole to punch. But this punch is actually confusing. Most of, if not the most of the voters, but many of voters actually thought about that. Okay, they want to vote for the Democratic, Al Gore,
and they punched actually for the reform candidate. You see, number 2 hole. And if you want to vote for the Al Gore, you have to punch number 3 hole. So this division was actually, you know, this was confusing. And number 2 was this hanging chart. This hanging chart means that when you punch it, there is a small piece of paper that is detached from the paper. If it is not properly detached, then the voting machine is not actually going to count it. That is another problem. समझ रहे हैं ना कि वो मशीन जो थी उसमें से अगर गुजरेगा और वो प्रॉपरली उसके साथ उतरा नहीं है, वो जो पीस ऑफ पेपर था, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा. और बहुत सारे लोग जो है they got confused with this scheme. अगेन ये HCI में भी वैसे जो है ना, HCI का भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन इंटरफेस के. अगर अब ये जो मतलब दिस स्कीम वाज, आई मीन द डिजाइनर ऑफ दिस बैलेट पेपर वाज quite confident, and she defended herself that it is very good design and it is actually kind of salutation to the older ones. But many, I mean thousands of voters got confused with this paper. Okay, so then they actually, I mean, discussed about the online voting. Now what are the benefits of online voting? More people would vote. What does it mean? I mean, yes, we don't need the physical presence, and we can actually remotely vote. अभी तक देखें पाकिस्तान में क्या है, overseas Pakistani, they cannot actually vote. This time, I mean, in this by-election, first time they were actually facilitated and they were offered to actually cast the vote. वो भी शायद ऑनलाइन उस तरह से नहीं था, वो शायद ये था कि दे हैड टू विजिट द एम्बेसी है और उधर शायद उन्होंने कास्ट करा, इस तरह का कोई सीन था. ठीक है, तो कुछ मुझे कंफर्म नहीं है. ठीक, तो ऑनलाइन वोटिंग तो ये कि यू जस्ट कास्ट योर वोट फ्रॉम योर होम. So obviously it is like there is a chance to actually get more votes. I mean the percentage of casted vote, what we call turnout rate, that can be increased by online voting. Number 2, votes would be counted more quickly, obviously, because no manual counting, so system is actually responsible to count it, and it is really fast. No ambiguity with electronic votes. What does it mean? Like what we just saw it, I mean the butterfly ballot paper, confusing ballot paper. So there is no ambiguity. You just have the radio buttons and you can just select it. No confusion. The chance of confusion is less. Although it depends. I mean, अगर आप poor designer हैं तो आप हो सकता है उधर भी interface ऐसा बना दें जो confusing हो. ठीक है? But in general, we expect that online interface will be better one. ठीक है? Cost less money. Agreed? Yes, sir. क्यों? I mean, in general, if we compare it with the physical, resources, then online resources, I mean, if we assume that everyone has computer and they are actually have internet access, then it seems like it is a cheaper way to actually cast a vote as compared to printing of the paper, ballot boxes and so on. ठीक है? वो जो सारे पूरे पाकिस्तान में वोट्स होते हैं तो जितना वो जो स्टाफ होता है उनको भी पे करते हैं, फिर आर्मी को सारा वो डिप्यूट करते हैं और वो अच्छा खासा वाला इन बिलियंस जो है ना वो बजट होता है. एलिमिनेट बैलेट बॉक्स टैंपरिंग. एग्रीड? मतलब एक देसी तरीके से टैंपरिंग खत्म हो गई और एक जो है ना सोफिस्टिकेटेड तरीके की टैंपरिंग तो आ गई ना. लेकिन स्टिल ऐसा नहीं होगा ना कि आप वोट सारा दिन डालते रहे एक बॉक्स में और शाम को कुछ लोग हैं वो उठा के ले जाएं और दूसरा बॉक्स उधर रख दें काउंटिंग के लिए. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है ना. सो ऑब्वियसली आई मीन दैट फिजिकल टैंपरिंग इज एक्चुअली नो मोर फिजिकल टैंपरिंग. ठीक है. सॉफ्टवेयर कैन प्रिवेंट एक्सीडेंटल ओवर वोटिंग. व्हाट इज ओवर वोटिंग? You have to cast one vote, but you actually cast more than one vote. It is quite possible when you have to cast multiple votes. I mean,
Like in Pakistan, we have if we have votes, I mean election on the same day for national and provincial, then in that case you need to cast 2 votes. But in some organizations you have to cast multiple votes at the same time. Like in PAC, Pakistan Engineering Council, they have election for like president, vice president, president for the specific province, then vice president, and so on. So one voter has to cast like or select like multiple candidates. In that case you have the chance of overvoting. Similarly, you have the concept of undervoting. Undervoting is just the reciprocal ना, उसी का बिल्कुल उलट है. कैसे हैं? कम वोट डाल दो, मतलब आपने वोट तो कास्ट करने 5 और यू जस्ट कास्ट लाइक 4 वोट्स. ठीक है, जब आपको मल्टीपल बैलेट पेपर्स मिलेंगे तो हो सकता है उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाए. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैन प्रिवेंट इट ऑब्वियसली. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क्स, possible disadvantages? Gives unfair advantage to those with home computers. Obviously, if someone has no computer, no internet connection, then how he or she is going to cast a vote? ऐसा ही है ना. उधर तो ये मेरे लिए बड़ी ऐसे हैरानगी की बात थी. अभी जब ये हो रहे थे ना, इलेक्शन होने लगे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई जो स्टाफ है, ठीक है, दे शुड हैव द स्मार्टफोन. ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर था ना, आरटीएस सिस्टम जो था, उसके लिए वो कह रहे थे कि दे शुड हैव द स्मार्टफोन. इफ समवन हैज नो स्मार्टफोन, देन व्हाट विल हैपन? वो कह रहे लेके आओ भाई, या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ना उसको. गवर्नमेंट एक उसकी ड्यूटी लगाई है, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ स्मार्टफोन में. ठीक है, मेरे पास 3310 है, तो भाई 3310 का पता है? नहीं यार, हमारे जमाने का बड़ा जबरदस्त फोन होता था. ठीक है ना, लेट जो 90s में नोकिया का जो है ना, वो 3310 फोन उसका मॉडल नंबर था. ठीक है, उस वक्त वो 3,500-4 हजार रुपए का था. बहुत मजे का फोन लगता था. अच्छा, एनीवेज, if someone has no computer, then it is kind of, you know, I mean obvious disadvantage in online voting. ठीक. Number 2 is more difficult to preserve voter privacy. जुनैद, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जुनैद बताएगा ना. जुनैद नहीं, जुनैद इतने परेशान क्यों हो गए हैं? यार सवाल पूछा है, पैसे तो नहीं मांगे आपसे. जी हसन, आप बताएं. किसी को दिखा के वोट नहीं करना होता ना, मतलब अपनी अपनी होती है चॉइस. तो लेकिन ऑनलाइन वोटिंग में तो फिर कोई और भी देख सकता है. ठीक है, ये तो बड़ा एक सिंपल सा एक है ना बात कि भाई अच्छा, तो अदरवाइज तो जब आप आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जब भी साइबर अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो और बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड जो है ना, है चेंज भी हो सकता है. ठीक है, तो आप इसमें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. आइडेंटिफिकेशन एक तो ये कि आपको कोई देख रहा है, लेकिन ये कि आप मैपिंग भी तो कर सकते हैं ना. आपने किसको वोट किया, ठीक है, जब एक ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, दैट ट्रांजैक्शन एक्चुअली कैन बी ट्रेस्ड. ठीक है ना, किस सिस्टम से हुई है, वो सिस्टम किससे बिलोंग करता है, और वहां से क्या चॉइस आई है. तो ये चीजें सारी, मतलब प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो गई ना. वहां पे तो हम ये कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट है, कोई उसमें ट्रेसेबिलिटी नहीं है. ठीक है ना जी? नहीं, नाम पे बैलेट पेपर पे तो कोई नाम नहीं लिखता ना. ठीक है, वैसे मैंने भी कभी नहीं डाला वोट. ठीक है, लेकिन ये कि बैलेट पेपर पे ट्रेसेबिलिटी उस तरह से नहीं होती है. अच्छा, नेक्स्ट इज मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वोट सेलिंग. ये क्या मतलब है? अब होता है ना, लेकिन वो कह रहा है कि ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. तो वो आपके घर में आके पैसे देते हैं ना, पोलिंग स्टेशन पे थोड़ी देते हैं. बात सुने भाई, नुमान की बात सुने सारे. जी बताएं. थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो पोलिंग एजेंट है ना, वो उनको ज्यादा वोटर के पास खड़े नहीं होने देते. वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह घर में या आपके सामने वो एग्जैक्टली घर में तो योगा के साथ बैठेगा, पैसे तब देगा जब वोट कास्ट करेंगे आप. ठीक है, और उसके कैंडिडेट को करेंगे. अभी तो ये हो सकता है कि मैंने बिरयानी की प्लेट खा के बाद में मुकर जाऊं. ठीक है, सही है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा. अच्छा, नेक्स्ट इज ऑब्वियस टारगेट फॉर ए DDoS अटैक. ठीक है, व्हेन यू आर ऑन द नेटवर्क देन इट इज आई मीन क्वाइट पॉसिबल.
इसमें कोई दूसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ इलेक्शन डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ होम कंप्यूटर्स। उसामा अमीद क्या मतलब है इसका? कोई यूज नहीं कर रहा, अनयूज नहीं हो रहा कंप्यूटर्स, सिस्टम्स, तो इतने इलेक्शन वहाँ पे अपने घर के कंप्यूटर मोर ओपन टू हैकर्स होते हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं होती। Exactly, मतलब home computers are more vulnerable. If you are actually conducting online voting, then it means home computers are part of that system. And if those computers are vulnerable to the attacks, then there is big question mark on the security of the system. ठीक है? Susceptible to vote changing virus or RAT. RAT is actually what it is. RAT, remote. A is A for remote action, I think. एडमिनिस्ट्रेशन ट्रोजन, ठीक है, T फॉर ट्रोजन, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस जो है बाय ट्रोजन, दैट इज रैट, ठीक है। वोट चेंजिंग वायरस क्या मतलब है भाई? मंसूर बताएं। वोट चेंजिंग वायरस, आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वोट चेंजिंग थ्रू सम काइंड ऑफ हैकिंग एक्टिविटी। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम यूजर के लिए कंप्यूटर पे अगर रैट है, वो जो कर रहे हैं हम वहीं से उसी वक्त चेंज करके आगे सेंड कर दें, या फिर जैसे सर्वर है में उस पे रैट या वायरस इंस्टॉल करके चेंज करते हैं कोड्स, तो वो तो अरे रैट से मुझे याद है, ये रिमोट एक्सेस कहलाता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है। रैट स्टैंड्स फॉर रिमोट एक्सेस, ठीक है, एक्सेस से है। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, ठीक है, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या करेगा आपके, मतलब मंसूर ने जैसे बताया ना, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू एक्चुअली चेंज योर चॉइस, योर ऑप्शन। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि ऑन द फ्रंट इट्स एवरीथिंग इज ओके, यू जस्ट वोट फॉर योर पार्टी, बट वंस यू सबमिट, योर चॉइस इज चेंज, अल्टर्ड, एंड सम अदर चॉइस इज एक्चुअली देयर इन द वोटिंग सिस्टम। एक पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। आगे एक और पॉसिबिलिटी देखें, ये जो लिखा हुआ है phony vote servers, what does it mean? There is a chance to actually have the phony webs, so not the web, actually the vote server, in fact the web servers, ठीक है ना। तो ये क्या मतलब है? phony मतलब फेक, ठीक है, फेक वोट सर्वर। आपकी जो चॉइस है उसको मतलब आपको लिंक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, वो जो फिशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, और फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। वो बोथ जो है ना, दैट एक्चुअली लीड्स टू द फोनी वोट सर्वर्स, ठीक है। यू आर गिवन द लिंक, ठीक है, टू कास्ट योर वोट, यू जस्ट यू क्लिक एंड देयर इज सम साइट दैट इज वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल द वोटिंग सिस्टम, and once you submit your vote, that is actually, there are different possibilities. They get your credentials and then they actually cast your vote on your behalf, ठीक है ना। credentials उनको मिल गए, वो कर सकते हैं। नंबर 2 कि आपका वोट उधर कास्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यू ज्यादा है, ठीक है। नो पेपर कॉपीज ऑफ बैलेट्स फॉर ऑडिटिंग और रिकाउंट, जो रिकाउंट का जो हमारे यहाँ अक्सर होता है, अभी भी चलता है, पूरे 5 साल में रिकाउंटिंग ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा? पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, प्रॉब्लम है, रिकाउंटिंग इज प्रॉब्लम। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो फिर उसमें तो सिस्टम ने काउंट किया है, रिजल्ट दे दिया है, बस इतने हो गए और दैट्स इट, ठीक है। ऑल्दो कि उसका भी टेक्निकल ऑडिट हो सकता है, फिर अगेन इट्स नॉट एक्चुअली सीम्स रियली फिजिबल, ठीक है ना। जैसे कि वो अभी तक ये डिबेट चलती है ट्रंप के हवाले से, ठीक है, कि भाई ये कैसे हुआ। ओके, यूटिलिटेरियन एनालिसिस ऑफ द ऑनलाइन वोटिंग। पॉसिबल बेनिफिट क्या है इसमें? टाइम सेविंग है, ठीक है। देन वी अज्यूम दैट 50% वोटर्स कास्ट द वोट, ठीक है, एंड एवरी वोटर एक्चुअली स्पेंड्स 1 hour to cast the vote, and average pay is $21 per hour. So if we just multiply, then it is like 10.5 per adult,
I mean in obviously in billions, बिलियंस डॉलर, ऐसा ही है ना? ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन आपको समझ आई है? ये 10.5 क्यों हो गया? किसने यस सर कहा है? मसूद ने बताए? मेरी मजाल है मैं कहूं, किसी और ने कहा होगा। नदीम खान आप बताएं, ये जो कैलकुलेशन सामने नजर आ रही है, ये 10.5 कैसे आ गया? ये बस सर लगे हुए हैं, बोलते रहे, उनकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारा क्या मसला है? ठीक है यार, सही है, गौर कोई नहीं करता है, अक्सर बस सुन ही नहीं रहे होते हैं। जब मैं टोकता हूं तो फिर सोचते हैं कि अच्छा कुछ बोल रहे हैं कुछ। क्यों 2 पे क्यों डिवाइड कर दिया है? क्या 50% है? आगे क्या 50% है? टोटल टैक्स में से 50% जो है ना वो वोट लेते हैं। वो तो जो नीचे 10.5 दावे टोटल एडल्ट्स का बताया हुआ है। एग्जैक्टली आप सही बताया आकिब ने कि जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली अबाउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकन, ठीक है ना? ऊपर हमने बात की है कि जो बेसिकली टर्न आउट है दैट इज 50%, ठीक? तो उस हिसाब से भी अगर देखें, अगर वो जो है मतलब 300 मिलियन है उनकी पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना, जो अमाउंट टोटल बनती है। अच्छा, जो पॉसिबल डिसएडवांटेज है दैट इज पॉसिबल डीडॉस अटैक्स। अच्छा, वो प्रोबेबिलिटी, we are not sure about the probability, we are not sure either it will be successful attempt or unsuccessful, ठीक है? तो और फिर ये कि वो जो अटेम्प्ट है अटैक करने की, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द आउटकम, वी आर नॉट एक्चुअली श्योर, ठीक है? तो ये सारी जब चीजें अनसर्टन है, हार्म्स और बेनिफिट बड़ा जो है ना कंक्रीट है, तो यूटिलिटेरियन एनालिसिस क्या कहता है कि वी शुड गो फॉर ऑनलाइन वोटिंग, ठीक है? साकिब दिल को नहीं लगी बात, ठीक है? कैंटियन एनालिसिस क्या कहता है? वो कहता है कि द विल ऑफ ईच वोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द बैलेट, ठीक है? एंड ईच बैलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेस्ट, ठीक है? सो वी शुड हैव द बैलेट, we should have the option to recount, we should have to option to actually reassess, ठीक है? तो then in online voting it is not possible. अगर ये नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है कि वो मैनुअल जो है वही ठीक है, ठीक है? मैनुअल आप देखें, वैसे एक जो पीछे देखें, जो बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, बात ये है कि वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जो ऑनलाइन वोटिंग के लिए है, वो भी बड़ा उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है, ठीक है? अगर फर्स्ट टाइम आप कोई उस तरह का काम करेंगे, जैसे इन्होंने आरटीएस अभी जो सिस्टम डेवलप किया था, इस पर अच्छा खासा पैसा लगा, ठीक है ना? और उसके अंदर फिर अगेन के सारे पर्सनल फोन यूज हुए लोगों के, जो स्टाफ के थे, ठीक है? और अगर ये वाली चीज आ जाए कि जिसके अंदर आप ओपन है, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, वो तो सिर्फ ये था ना कि उन्होंने रिजल्ट्स अपलोड करने थे, ठीक है? तो अच्छा खासा एक इसके लिए ह्यूज बजट चाहिए इफ यू वांट टू रियली कंडक्ट ऑनलाइन वोटिंग ऑन नेशनल लेवल, ठीक है? जी मंसूर नहीं था ना, मतलब वो भी उसकी कैपेसिटी नहीं थी ना उस सिस्टम की इतनी कि एट अ टाइम इतने जो है ना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है? अच्छा, तो आप कंक्लूजन बता दें, कंक्लूजन क्या है जी? Existing systems are highly localized. What does it mean? I mean the systems that are actually facilitating us for the online voting in different states, in different counties, they have this system. So that is actually, the scope of that system is quite limited. ठीक है? But if you make it online on the internet, then obviously there is more chances to actually to have attacks, ठीक है ना? different type of attacks, the mainly is the DDoS attack, ऐसा ही है ना? ठीक है? और जी ठीक है, सही है, नो पेपर जो है वो नहीं है उसके अंदर,
ये बात जो एविडेंस ऑफ टेम्परिंग ऑफ फॉर ऑनलाइन सिस्टम, ये जो अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ जो ट्रम्प वाला इलेक्शन है, ठीक है, ये इसके ऊपर अभी तक ये डिबेट हो रही है, ठीक है। आई मीन कि जी ये वाकई फेयर इलेक्शन था या नहीं था, ऐसा ही है ना। कंटिन्यूसली ये चीज डिबेट हो रही है कि भाई रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक अगर पाकिस्तान में होगा तो क्या होगा, है एक और क्यास होगा, ठीक है ना। जैसे अभी एक वो एक कंपोनेंट था ना, एक ट्रेडिशनल जो हमारा वोटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक कंपोनेंट हमने ऐड किया, दैट वाज एक्चुअली मतलब इंटरनेट बेस्ड था, ठीक है, और उसको हम प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सके, और उसको भी हमने एक्सक्यूज बनाया हुआ है, पूरे उस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो obviously when we rely on the home computers we say that those computers are not actually very updated, है, तो प्रॉब्लम तो है, वुलनरेबल है, तो फिर तब भी होगा, ठीक। तो कंक्लूजन ये है कि जी वी शुडंट हैव दिस ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है क्या आने वाले सालों में हम किधर चले जाएं, किधर पहुंच जाएं, ठीक है। एग्रीड, यस, नो, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो ठीक है ना, वो तो यूएस में होते भी हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल चांसेस तो है ना, जो अभी हमने पीछे यूटिलिटेरियन के केस में किया है कि देयर आर चांसेस, ठीक है, ऑफ द अटैक्स, पॉसिबल अटैक्स। तो उसमें ये है कि जी अच्छा ठीक है, फिर हमें मतलब वी हैव टू बी ऑन सेफ साइड और वी शुड हैव द मैनुअल सिस्टम, नॉट रियली द मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम जब कह रहे हैं ना, देखें वहां पे डिवाइसेस होते हैं डिफरेंट, जो कि आपके वो जैसे आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, तो उसके लिए भी आपका वो स्कैनर इस तरह का होता है कि जो आपकी चॉइसेस को जो है ना वो कर लेता है, और ये नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ एक एक पर्ची को काउंट करना है, ठीक है। मतलब जैसे अभी ये हमने बात की ना बटरफ्लाई बैलेट पेपर जो 2000 में, वो तो उसको मशीन ही वो देख रही थी ना कि उसका ऑप्शन क्या है, तो अगर उसके अंदर वो हैंगिंग पेपर है तो वो उसको इग्नोर कर रहा है, मतलब उसको काउंट कर रहा है एज ए इनकरेक्ट, ठीक है, और ये कैंसिल वोट कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। मतलब डिवाइसेस स्टिल इलेक्ट्रॉनिक यूज होते हैं मैनुअल वोटिंग सिस्टम के अंदर भी, ये नहीं है हरगिज के सारा टोटली 100% मैनुअल सिस्टम है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यू गो टू स्पेसिफिक प्रेमिसेस एंड देन यू कास्ट योर वोट, ठीक है ना, टू जस्ट मेक इट सेफ। आप क्या कह रहे थे जी? रिकाउंट कैसे होंगे? तो सिस्टम में काउंटिंग में तो गलती नहीं की है ना, वो तो हम मैनुअल काउंटिंग में कहते हैं कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिस्टम को जब आपने जो जहां पे सेव हो रहा है डेटाबेस में कहीं पे, तो वो तो नंबर तो सही बता रहा है ना कि इधर इतने मिलियन ऑफ वोट्स हैं, ठीक है। तो उसमें रिकाउंट की ऐसा जो उस तरह की जरूरत नहीं है, मतलब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिस्टम का नंबर जो है जनरेट किया वो तो गलत नहीं है ना, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। अगर आप उसकी टेम्परिंग कर दें तो और बात है, लेकिन उसमें एज कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम वहां पे वो नहीं है। अभी आपको पता है ये सरगोदा में ये पिछले वीक में दिखा रहे थे, पीटीआई और नून लीग का बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, और जो नून लीग का जो कैंडिडेट था ना वो कुछ वोटों से जीत गया था। वो दूसरे ने रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट की थी, और फिर रिकाउंटिंग जब हुई तो वो कुछ और वोटों से जीत गया, मतलब वो आगे निकल गया ना कुछ वोटों से। सरगोदा की एक नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर ये इस तरह से हुआ है। चलें भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ये खत्म हो गया मेरे ख्याल में हमारा चैप्टर, ठीक है।